So let us start with the All India Judicial Services. So when I talk about the All India Judicial Services, हमें इसे trace करना पड़ेगा from the emergence of the concept. The first time the concept was emerged to the recommendation of the 8th report of the Law Commission in 1958. आप 1950s भी याद रख सकते हैं कि आइडिया पहली बार कब emerge हुआ था. तो लॉ कमीशन ने इसको पहली बार रिकमेंड किया था. Then in 1960s, there were some of the chief justice conferences who basically the conclusion of all the 3 consecutive chief justice conferences, they supported the idea of all India judicial services. Then came the Swaran Singh committee, which again backed the idea for the voiced for the All India Judicial Services, and finally through the 42nd Amendment, Constitutional Amendment Act of 1976, an amendment was done to the Indian Constitution under Article 312, and an article was mentioned, that is Article 3121, wherein it was mentioned that Parliament can create the All India Judicial Services on the lines of other All India services. So you must be aware about the Article 312, it deals with the All India services. And through the amendment, that is the 42nd Amendment on the recommendation of the Swaran Singh Committee, it was made here, or you can say the Parliament was empowered here through the Article 312 sub clause 1, that the Parliament can create All India Judicial Services. But here one more amendment was made, that is Article 312 sub clause 3, which said that it should be only for the judges above the level of district judge. That is, if you are going to come with this concept or the idea of All India Judicial Services, then it should be there, or it should be made only to recruit the judges over and above the position of district judges in the country, right? तो ये आइडिया का emergence है. अब इसको अगर हम present context में लेके आए, so a few of the recent Chief Justice of India, including the S.A. Bobde and the Lodha, along with the central government, have again voiced their support for the All India Judicial Services. So government already is preparing a draft bill which will give effect to the All India Judicial Services, right? इसीलिए ये न्यूज में मेंटेन्ड है और आज ये एक आर्टिकल आ गया इसके ऊपर. सो द टाइम वाज राइट टू डिस्कस अबाउट द इशू इन इट्स एंटायरिटी. द थिंग इज, व्हाई डू वी नीड अ सर्विस of all India nature like the All India Judicial Services? So first, talking about the need, that why do we need All India Judicial Service? First is the reason of vacancies. So you already are aware about the fact that there are huge number of vacancies across the Indian judiciary. That is, if you talk about the lower judiciary, then there is approximately about 26% of the vacancy, and in some of the states like Bihar, the vacancies in the year 2019 were high up to 80%. Then if we talk about the high courts, then in this year only, in the month of February, in a report released by the Department of Justice, we saw that there are approximately 38% of the vacancies in the high court of the country, right? So there is the problem of vacancy, and since the appointment procedure for the subordinate level judges and the district judges, as mentioned under Article 234, 235, and also you should also be aware about the Article 233. तो ये जो तीनों articles हैं, they give the power for the appointment, for the posting, for the promotion of the judges of the subordinate level and of the district level, largely to the governor in consultation with the either state public service commission in certain cases and also in consultation with the state high court. तो ये अभी तक का सेट प्रोसीजर है. इस प्रोसीजर को थोड़ा सा और हम समझते हैं यहाँ पे बिफोर गोइंग टू दी सेकेंड पॉइंट ऑफ द नीड. सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 233, 234 एंड 235 फ्रॉम द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि प्रीलिम्स में ये डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, और मेंस में भी अगर आप इन आर्टिकल्स को ड्रॉप करते हो, देन इट विल बी वेरी गुड in a sense that it will make your answers more impactful and you will look like an informed aspirant out there, right?
तो 234 की बात करते हैं। 234 टॉक्स अबाउट द सबऑर्डिनेट जजेस इन द कंट्री। सबऑर्डिनेट का मतलब है डिस्ट्रिक्ट जजेस से नीचे के लेवल के जितने जजेस होते हैं उनको सबऑर्डिनेट जजेस बोलते हैं। As of now in our country, we have a direct recruitment process for the judges through an examination only at the subordinate level. ये प्लीज पॉइंट आप याद रखिए कि थ्रू द एग्जामिनेशन प्रोसेस direct recruitment of judges is only there at the subordinate level. डिस्ट्रिक्ट जज को कभी भी एग्जामिनेशन के प्रोसेस से सिलेक्ट करके कोई भी एक इंडिविजुअल को डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बनाया जाता है हमारे देश में। ना ही उसे हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है और ना ही उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। थ्रू द एग्जामिनेशन an individual can only become the judge of his subordinate level or the subordinate judiciary. So what is the process out here? So here governor basically appoints the judges for the subordinate judiciary, and for that it makes the rules. So rules also are made by the governor, but the rules such should be made in consultation with both, that is the High Court and the State Public Service Commission. So State Public Service Commission here is authorized to conduct the examination of the judicial services in consultation with the High Court and the governor, and then after the results are out, then governor appoints those individuals as the candidates or as the judges of the subordinate judiciary. This is the set procedure under Article 234. Article 233 here talks about the appointment of district judge. Now, how a district judge in a country is appointed? So district judge again is appointed by the governor, but here you will not find the role of State Public Service Commission. It is that an individual can be appointed by the governor in consultation with the High Court. So there are only two key stakeholders out here, that is one is governor and second is High Court. Governor appoints an individual to be district judge in consultation with the High Court. हियर अगर किसी को विदाउट एग्जामिनेशन, देखिए यहाँ पे है ना दो चीजें हो जाती हैं। एक, आप उस पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ डिस्ट्रिक्ट जज जिसको आपने पहले एग्जामिनेशन प्रोसेस के थ्रू रिक्रूट किया था, सिलेक्ट किया था टू बी सबऑर्डिनेट लेवल जज, तो उसको आप प्रमोट कर सकते हैं टू बिकम द जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, पॉइंट नंबर 1। एंड द सेकेंड प्रोसेस आउट हियर इज दैट an individual who has a practice of about 7 years can also be directly recruited as a district judge if the High Court gives the green signal. So High Court basically recommend करता है कुछ नाम to the governor and then governor merely appoints those individuals as the district judge. तो यहाँ से from the district judge onwards the process is twofold, that is one through the promotion and second through the direct appointment डिपेंडिंग अपॉन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 7 इयर्स का है, हाई कोर्ट पे 10 इयर्स का है, राइट, एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट देन अपॉइंटेड थ्रू द गवर्नर। तो ये है दो आर्टिकल्स, 233 जो डिस्ट्रिक्ट जज को डील करता है, 234 जो सबऑर्डिनेट जजेस को डील करता है, एंड द आर्टिकल इज देन दैट इज 235. इट सेज दैट द कंट्रोल over the entire subordinate judiciary, including the district level judiciary in a particular state, will fall directly under the High Court having the jurisdiction over the similar state. तो जिस भी स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा उस हाई कोर्ट के पास सारी पावर होगी ऑफ प्रमोशन, ऑफ पोस्टिंग्स, ऑफ ट्रांसफर ऑफ ईच एंड एवरी सब ऑर्डिनेट लेवल जजेस। ये आर्टिकल 235 यहाँ पे बताता है। तो you can conclude from here that as of now the system in the country across the states is that state government and the high courts, they both play crucial role in the appointment, promotion, posting, transfers of the lower level judges in the country. Now, when you talk about the All India Judicial Service, definitely you are talking about a process which is gonna imbalance the situation which is in existence as of now. That is, you are gonna deprive few of the powers of either the state government or the high courts
in the existing process. तो इस चीज को हम बाद में एनालाइज फर्दर करेंगे, दोबारा करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप करनी जरूरी थी. सो व्हाई डू वी नीड AIJS? So for the first reason is vacancies. There are huge vacancies and we need to fill it in an expedient manner. The second requirement is that there is too much of corruption, red tapeism, standardization across the lower judiciary across the length and breadth of India is generally not observed. So it definitely will also provide us with some sort of standardization. So we need to standardize the lower judiciary across the length and breadth of India as well. For that, you need All India Judicial Services kind of a concept. Then you need All India Judicial Services for the proper representation of the marginalized community in the judicial services of the country. So here you can talk about the representation, proper representation of the marginalized community, right? Why? What else can be the need? तो जो हम need discuss कर रहे हैं, ये automatically will become the benefit. Need और benefit के points will remain more or less the same. तो वैकेंसीज आपकी प्रॉब्लम जो है वो कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है, स्टैंडर्डाइजेशन आ सकता है, रिप्रेजेंटेशन विल बी मोर प्रूडेंशियल, विल बी मोर tangible, more visible if you come up with a concept like AIJS. Then what else? You can, through the AIJS, attract the best talent. You can ensure professionalism and professional conduct in the Indian judicial services right from its first step, that is the lower judiciary, to up till the Supreme Court level. तो ये कुछ यहाँ पे नीड है, बेनिफिट है, दोनों के पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है, जिसके कारण हमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस चाहिए. So what actually is the All India Judicial Service? What are we trying to achieve through the All India Judicial Service? तो गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया, एक ड्राफ्ट बिल रेडी कर रही है. द ड्राफ्ट बिल स्टिल इज नॉट इन द पब्लिक डोमेन, तो हम यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स को डिस्कस नहीं कर पाएंगे. But if I talk about the idea, so the idea out here is that the government is trying to recruit judges through a recruitment process, that is through a competitive examination to be probably conducted by the UPSC. Probably क्यों? क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि उस बिल में क्या है, और वो बिल पास भी होगा अभी in the times to come, तो उसके बाद ही यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिलेगी. So what government is trying to do as of now is that the government is trying to directly recruit the judges through a competitive examination probably conducted by the UPSC at the district judge level, or you can say the subordinate level. तो सबऑर्डिनेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे, यहाँ पे एक एग्जामिनेशन के थ्रू गवर्नमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करना चाह रही है. तो वो पॉइंट वापस यहाँ पे आ जाएगा that if the AIJS comes into being, if it becomes a reality, then obviously few of the powers of the state government and the high courts might be deprived in the times to come, right? See what happens in the case of other all India services, like if I talk about the IAS officers, तो IAS officers का भी रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो एक एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, जिसकी हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूपीएससी. बट आपने एक पॉइंट देखा होगा, हमेशा नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है, और आपने अपने कन्वेंशनल बुक्स में पढ़ा होगा, that recommendation by the UPSC of a particular individual to be appointed as an IAS does not make him the IAS. Then it totally depends upon the central government whether it wants to recruit that person or not. यूपीएससी ने एग्जाम लिया और उस एग्जाम के जो फाइनल लिस्ट आई उसके बेसिस पे उसने रिकमेंड कर दिए कुछ नाम, लेकिन यूपीएससी के रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होते हैं ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो द सेम थिंग वुड बी एप्लीकेबल आउट हियर, लाइक दैट AIJS का एग्जाम लिया, कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट आई जो सिलेक्ट हुए, उन कैंडिडेट्स की लिस्ट को यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या तो खुद रिक्रूट कर सकती है, पॉइंट नंबर 1, खुद वो रिक्रूट करके अपॉइंट कर सकती है इन द लोअर जुडिशरी. उस केस में क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट की
आपने कंप्लीटली उनकी पावर्स को डिप्राइव कर दिया. नाउ दे हैव नो रोल टू प्ले एट ऑल. सेकेंड यहाँ पे चीज क्या हो सकती है, उन रिकमेंडेड नेम्स को यू कैन गिव इट टू द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द हाई कोर्ट, एंड देन दोज हाई कोर्ट्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स will make the appointment. So you have not deprived them completely of their powers with respect to the appointment. तो ये एक डिफरेंस है. ये अब आगे बिल ही बताएगा या जब वो पास होंगी चीजें तभी हमें पता चलेगा कि इन दो प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस फाइनलाइज होता है. बट फ्रॉम योर ओन एनालिटिकल पावर आई बिलीव दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू हियर अंडरस्टैंड कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट को पावर देती है कि आप अपॉइंटमेंट करो फ्रॉम द लिस्ट विच दैट हैज बीन रिकमेंडेड बाय द यूपीएससी, then it will be a better solution because you won't be attracting substantial amount of criticism in that case at least. तो अगर आपको भी वे फॉरवर्ड में सजेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल इस साल मेंस में आ जाता है अबाउट द AIJS, तो आप वे फॉरवर्ड में इस तरीके का सोल्यूशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? Okay, so this is the AIJS, that is the recruitment of an individual at the lower judiciary level directly by the central government. और उसमें होगा क्या, एक स्टैंडर्डाइजेशन रहेगा, बेस्ट टैलेंट रहेगा, जो करिकुलम है दैट विल बी वेरी मच डिफाइंड, प्रोफेशनल कंडक्ट इज कैन बी एक्सपेक्टेड देन इन द सर्विसेज right from the lower level to the highest level. Vacancies can be filled in expedient manner. But what are the limitations? Obviously, there would be some limitations as well. And the limitations are more important than the need and benefits. Because जब आप इसको देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि limitations यहाँ पे कितना important role play कर रही हैं. So first limitation here you can talk about is that the concept of AIJS is against the federal setup of the country. That is, it is against the Article 235. 235 क्या बोलता है? That the control over the subordinate judiciary in any state will lie with the respective high court. So here you're trying to imbalance the equation between the executive and the judiciary. We have well-defined pillars in the Indian democracy: executive, legislature, judiciary. And if you encroach into any one pillar's domain and robs him or robs that pillar of its authority, then definitely there would be some imbalance in the powers that the constitutional makers would have envisaged back in 1950s. तो आर्टिकल 235 को आप यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड यू आर इन अ सेंस एनक्रोचिंग अपॉन द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट्स. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, फेडरल सेटअप में स्टेट गवर्नमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है कि वो एग्जामिनेशन प्रोसेस के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं ऑफ द सबऑर्डिनेट लेवल जजेस. So that also will be imbalanced. That also would be a case of imbalancing the equation between the state government and the central government. ठीक है? तो ये एक पहला limitation है that the federal setup here can be imbalanced, right? Point number 2. There is definitely lack of consensus among the stakeholders out here. अब AIJS को पास कैसे करना है? So do we require a constitutional amendment act out here to give effect to the All India Judicial Services? The answer is no. So you do not require any constitutional amendment act under Article 368. It just needs to be passed with a simple majority of 50% and above present and voting. Right? तो यहाँ पे एक चीज एकदम क्लियर है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसको तुरंत अफेक्ट दे सकती है विदाउट इवन कंसिडरिंग द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स. गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन दैट वुड नॉट बी कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टिव legislation, or that wouldn't be called as a, you can say, a prudential deliberative or a prudential deliberation on a particular bill, right? So that is why we need to here first find the consensus कि स्टेट गवर्नमेंट सारी एग्री करें, हाई कोर्ट्स एग्री करें,
सुप्रीम कोर्ट एग्री करे एंड ओनली आफ्टर दैट वी कम अप विद द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट. लेकिन यहाँ पे एज ऑफ नाउ इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट देयर इज अ लैक ऑफ consensus. There are approximately 9 states which are totally against the concept of the All India Judicial Services. Even the high courts are not very much sure about giving effect to the All India Judicial Services. So this is the second limitation that you can here talk about. That is lack of consensus. Point number 3, the limitation number 3, there would be administrative limitations as well. Now, what kind of administrative limitations we are here talking about? First, what about the local language and its prevalent use in the lower judiciary across India that we observe? So, under the CRPC and IPC, especially at the lower judiciary, it has been allowed to even give the judgments in the local language. Proceedings are done in the local dialects, local languages. अगर आप एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस फॉर्म करते हैं और सपोज करिए एक साउथ का बंदा अपॉइंट किया जाता है इन द नॉर्थ, या वाइसा वर्सा, नॉर्थ का बंदा अपॉइंट किया जाता है इन द साउथ और इन द नॉर्थ ईस्ट, समथिंग लाइक दैट. So how can you expect that individual to be proficient enough, to be efficient enough in the quality justice delivery when he or she is not very much used to or is not very much informed about the local language, is not known to the local languages? तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू है, एक प्रैक्टिकल इशू है which can come in the later future if you give effect to the AIJS. Second issue out here is again with respect to the local customs and laws. So there are regions, there are places where still is the prevalence of local laws and customs, and if you give effect to the AIJS, then ये चीजें भी यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा hurdle बन के सामने आ सकती हैं, right? So these are the administrative limitations जो यहाँ पे आपको mention करने हैं. तो ये है कुछ 3 मेजर लिमिटेशंस. लेकिन अब सिर्फ यहाँ पे हम नेगेटिव बात नहीं करेंगे, वी विल ट्राई टू सॉर्ट देम आउट. लाइक देखिए, सिमिलरली वी विल डू इट विद द बेनिफिट्स एज वेल. जैसे वैकेंसी को यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बेस बना के पोर्ट्रे किया गया है टू शोकेस द नीड फॉर द AIJS. बट यू सी even with the IAS officers, there is shortage of around 22% IAS officers in the country as of now, irrespective of the fact that they are recruited by the UPSC. They are the part of All India services. So what is the surety that if you roll out AIJS, then the vacancies or the issue of vacancy will not be there? तो आप इसको काउंटर कर सकते हैं by giving the example of IAS shortages in the country of around 22%, right? As of now. फिर प्रॉब्लम आती है यहाँ पे एक लिमिटेशन हमने मेंशन करा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशंस होंगी. लोकल लैंग्वेज एक इंडिविजुअल कैसे सीखेगा और कैसे क्वालिटी जस्टिस डिलीवरी उसके थ्रू वो कर पाएगा. So the thing here is, again, you can compare it with the All India services and the IAS officers. Even IAS officers of different states are given cadre to different states. That is, to the state, the custom of which, the language of which they are not very much known to. Yet they perform efficiently in those states. So it totally depends upon the intense training programs that you come up with. तो यहाँ पे भी अगर आप इंटेंस लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करते हैं, then it will be possible for you to overcome the barriers of language and of the local laws and customs. तो डिपेंड करता है कि आपको ज्यादा क्रिटिसिज्म्स लिखने हैं या आपको इन फेवर ऑफ AIJS में बात करनी है. अकॉर्डिंगली यू कैन यूज द फैक्ट्स एंड मोल्ड, जैसे अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट? So these are the things with respect to the All India Judicial Service. यहाँ पे अगर आपको वे फॉरवर्ड की बात करनी है, so the thing is, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया that it will be advisable for you to suggest that there should not be complete deprivation of the powers of High Court and the state governments.
Also, consensus should be arrived at, irrespective of the fact that Article 368, the amendment under Article 368, is not required to give effect to the AIJS. Still, you should before implementing the concept arrive at the consensus, ताकि जो National Judicial Appointments Commission के साथ हुआ था, the fate of the National Judicial Commission is not repeated with the AIJS. वहां पे because you did not take the Indian judiciary into the confidence, so the Supreme Court had struck down the NJAC and declared it to be unconstitutional. So similar kind of thing should not happen with the All India Judicial Services, and for that you need the consensus out here, right? So ये सारी यहाँ पे बातें आप way forward में कर सकते हैं.